Good evening, everyone. Assalamu alaikum. My name is Aziel Zafar, and first of all, I'd like to thank Ma'am Asia and Sir Bilal that they gave me a chance to do this presentation with all of you tonight. I also would like to say that I feel very honored that they thought I was able to do it, to be honest. So, yeah, thank you for that. So, my presentation, or the topic of tonight's talk, is the ideal mindset of a student. I've mentioned about 5 points in this short presentation, which I kind of learned through my own experiences and experiences of other students, other people. And I think these are the 5 main things which are worth sharing. Some of them are obvious, some of them are not too obvious. Some of them you'd have to learn sometimes through your own pain or your own experiences. So I'll start with that now. Yeah, so first of all, a bit about me. Again, my name is Aziel Zafar. I'm 21 years old. I was born in a small city, Narwhal, where I am at the moment with the internet problems. I moved to Lahore when I was around 1 and lived there for most of my life till I was 18. I completed my O-levels from Beacon House campus, where I was taught by Ma'am Asia for about 2 years. I was taught chemistry by an absolutely legendary teacher. I also did my A-levels from Lahore, from LGS Johor Town campus. It's a bit of a blur because of COVID, and I was kind of sleeping most classes is online, but I was told I have to make a good impression, so I won't go into too much details on that. But I did my subjects in sciences. In my A-levels I had physics, chemistry, biology, psychology, and then after my A-levels I moved to Ireland for my undergrad studies, where at the moment I'm studying molecular biology. I'm going to move into my third year now when I go back. I'm studying in Southeast Technological University, or SETU, in a city called Waterford, down in south of the country. So it's good fun. With my studies there, I'm also working with a student union. Last year I worked with them as a science and computing officer, where I was helping to manage the class reps for the department, and kind of a middle ground between the student reps and the teachers, the faculty in the head. And I am also working as a peer-to-peer mentor to help first years integrate better in the new system. If they have any questions or if they need any sort of help, if I can't help them, I can tell them where to go. Just things like that. I also love to do gigs. I'm a musician myself. I mainly play the guitar, sometimes play the piano just a bit. And I also do like small gigs in my university. I used to do them a lot during my O-levels, and sometimes I play or lead the worship at my church on Sundays. I also play squash sometimes. It's good crack. Helps me stay fit. Not the best thing at this weather, but sure luck. So now, when students come into to a phase of their life which would kind of lead where they would go, kind of lead their career, lead their life, the one main question which comes in is what to do and how to do it. And this question, I've again mentioned 5 points which I felt are worth sharing. Excuse me. First of all, plan ahead. My experience, I think you should plan at least 3 years ahead. Because then, for example, if you're in your O-levels, you plan 3 years ahead. You know what grades you'd be aiming for. You would know what other school you'd be going to if you have to do your A-levels. And the best time for that would be your O1 and O2, because that's the time when you have, the most amount of time and mental health in your hand, and you could just invest that in just planning. And this barely takes a week. Literally, if you just do a couple of hours every day, you'd be done with it in about 3 days.
If you want to keep it easy, you can just, let it go and just stretch it for a week and you'll be sorted. And then once you're done with that, a year passes, you plan for the next year again. Three main things which I felt benefited me through this was that it helped me to avoid last minute work stress, because to be honest, I procrastinate a lot, and you don't want to procrastinate, because if it becomes a habit, it's really painful in your college years and your university years. So lesser cortisol in your brain, lesser work stress, easier to do things, and better mental health. It also increases your productivity, because then you have a clear mindset. You know what you're going to do. You know what you'd be aiming for. You'd have more clarity, and which as a result would also increase your creativity. Second thing, always expect hurdles and always keep a plan B. Hurdles are one thing you just cannot avoid, literally. Again, this thing is fairly obvious that no journey is a smooth journey. No matter what car you drive, no matter what road you take, there would be always something which would kind of slow down your progress. But you need to remember that slow progress is still progress. With the hurdles, these could be like near missed grades. Now, for example, you were aiming for A stars, you just missed the A star by a few points, you end up getting an A or a B. It's not the end of the world. You could still manage. It's not too bad. Another type of hurdle could be a change in your admission criteria for your colleges or universities. Could be again, it could be sudden as well. You just never know. It's just out of your strength, out of your grip. You just can't do anything on it. So always keep a plan B. And life is all about how you handle plan B. You always know what you're going to do in your plan A. Everything's sorted. Everything's in a particular order. But your ability to handle your plan B would show you how well you can handle later challenges in your life. It's also kind of an opportunity to start fresh. You could just change the way you do things. Plan A didn't work. No worries, you have 25 more letters, alphabets. Just have another plan. Apart from that, plan B sometimes works out better. For example, for myself now, I studied psychology in my A levels, and I really wanted to pursue a career in psychology. But the university I was aiming for in Ireland was a bit too far from where I got my accommodation, and also it kind of was a bit unaffordable in terms of money. So I ended up doing molecular biology, and I absolutely love it now. I never went into that much of lab work, and I probably couldn't even do it in Pakistan, because I never knew what kind of work it was. I never knew what I would be experiencing. So yeah, it works out better, and it's a new opportunity, a fresh start. The third thing, surround yourself with what you love to do. For example, get a hobby. It's a fairly easy thing to say, easy thing to do as well, in my opinion. I do music sometimes, just whenever I'm exhausted from studies. Even during my exams, I just record a video or upload it on Instagram or something. Just so I can have a break from whatever I'm doing at the moment. It could be a sport, keep you healthy, keep you fit. It's kind of a good escape from your daily routine, your studies and everything else. It improves your mental health, improves your physical health, as I said, if you have sport as your hobby. It also enhances your cognitive functioning, which is a good thing. Well, again, less stress, and you'd be more productive. It also develops your personality, which is fairly important when it comes to the later part of your life, specifically for students. Another thing, come to my fourth point, which I think is the most important.
from everything I've shared at the moment. Learn to accept your failures. You cannot emphasize enough on how much time people spend on just thinking over what they've done wrong. Like I did it myself. That's why I think this is the most important. I've made so many mistakes. I've spent so much time just thinking like I could have done this, I could have done that. What if I didn't do that? Well, at the end of the day, it doesn't matter because whatever is done is done. Like you cannot change it by just thinking over it. If you think over it too much, you'll ruin whatever you have at the moment. You just destroy. You limit your options further with your failures. I found this quote from Winston Churchill online, and I think it's one of the most powerful things I've just read. Success is not final, and failure is not fatal. If you fail, it's okay. There are many more chances in your life which you just can't see now, just like you just can't see your future. Sort out your problems when you fail. Failure comes with problems, but then it comes to you if you could sort it out or not. Because there are some problems which you could solve, there are some problems which you cannot solve. Write them down if you can. That's what I do sometimes. I make a column of the problems I have, and on one side there are the problems I can solve, on the other side there are the problems I cannot solve. If the problems I cannot solve, there's no point of thinking over them. If they stay, they stay. If they go, they will go with time. You just cannot do anything. But for the problems you can do, you need to work on them. You need to plan them out. You need to think over them. You need to brainstorm. You need to think of options and just work with whatever you have at the moment. Again, move on. There's no point of just staying stuck on that particular failure, the particular kind of bump you felt with this type of failure. Lower your ego. That's okay if you fail. Everyone fails. There's like no one's perfect in this world. If you fail, it will teach you something, and that's where the point where you learn from your mistakes comes in. The best thing to learn from is your own mistakes. You could see people making bad decisions. You could see their consequences. But once you go through it yourselves, that's when you learn the best. Another thing which comes in when you fail sometimes is criticism from people around you. Could be your friends, could be your family members, sometimes could be your teachers. Like if someone just comes in and says like, yeah, इससे नहीं हो पाना, मतलब इससे नहीं हो सकेगा. It doesn't matter. One quote I'd like to mention, which I came across while I was watching this TED talk a few years ago by Sean Stephenson. He said, "Never believe a prediction that doesn't empower you. It would just ruin your confidence. So whatever they say, believe it." One thing you could do is work hard and prove them wrong. That's where you could make the difference. Now, towards my last point, I added a bit of Irish slang in it. Have some crack. Have some fun. That's what it means. Enjoy yourselves. Like people would say, like, that's true actually. Well, in my opinion, that's also true. But at the same time, you don't want to ruin your today for a better tomorrow. Work hard and also have fun. You know what you can do in today. You have power over today. Do your work, have some fun, and enjoy yourselves while you do it. Because you just never know what's going to happen tomorrow. So you're better off just making the best of what you can today. And that is my last point, and that's the end of the presentation. Thank you. If there are any
questions or anything else, I'd really appreciate it. Thank you very much, Aziel, Thank you. for such an insightful presentation. I found it truly inspiring and thought-provoking. And I'm really grateful you spare a time for us. And uh, if I remember, I would like to picture Aziel. ये एक ऐसा मेरा प्यारा सा स्टूडेंट रहा है कि ये इसके अंदर जो विजडम था हमेशा से था, और ये एक कॉर्नर में बैठा हुआ इतने सारे लोगों में ये अपने एक कॉर्नर में बैठ के अपना काम पूरा करता था. और अभी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, सारे आप लोग सवाल पूछें, लेकिन मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आखिर 1-2 मिनट में, हमें एक छोटा सा एक गाना भी जरूर सुना. ये बहुत अच्छा सिंग करता है और सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन के. तो अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट करें, नहीं तो पहला क्वेश्चन फिर मैं पूछने जा रही हूँ. और माय क्वेश्चन इज कि in school students are subjected to so many activities. Now you talked about 2 years of O level, and you said that they are very important for the mental health. Can you elaborate this point? कि वो जो 2 साल हैं वो कैसे बच्चे प्लान कर सकते हैं? Yeah, again, as I said, okay, in O1 and O2, because उस टाइम पे अभी एग्जाम्स नहीं होते. O1 में अभी जरा easy, थोड़े easy फेज में होते हैं. टीचर्स भी अभी इतना ज्यादा पुश नहीं कर रहे होते. वो ये जरूर कहते हैं कि जी बड़ी जंप है, आप नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से आप कैम्ब्रिज के सिस्टम में आए हैं, लेकिन आपके पास फिर भी काफी टाइम होता है. You just have a lot of time in your hand. Like you could actually use that time. Like personally, how when I was doing my O levels, I was mainly wasting my time in my O1 specifically. Even my O2. In Beacon House, we have like split exams. We have 3 exams in O2 and the rest of them in O3. So I had a bit of work in O2, but I still wasted a lot of time, which I could have used to plan, but I didn't. But that's where, So what do you suggest? So what do you suggest? Is it teacher responsibility to make them realize, or is there anything which we add to a system that students understand the intensity of these all years they added to A levels? What do you suggest? I would say it's mainly the responsibility of the education system and teachers specifically, because for me, मैं अपने खानदान में पहला बच्चा था जो इस system में से गुजरा. So I actually had no idea what I was doing. So if I would have been told with the specific amount of intensity, और एक जरा सख्ती से कुछ बिठा के कहीं पे कोई इस तरह का ही सेशन होता चाहे जिसमें एक इम्पल्स जो है प्लानिंग की टाइम पर और एक क्लैरिटी उस टाइम जो हमें आनी चाहिए उसका मुझे बताया जाता है. I think that would have been most special, because in your A levels you barely have enough time to eat sometimes. So that's in your O1 and O2. That's the best time where you could just plan. And as I said earlier, again, it just takes about a week, nothing more than that. मैंने ये भी देखा है कि जो एक मेंटल हेल्थ है A लेवल्स में स्पेशली जाके, जो A2 में जाके प्रेशर बिल्डअप होता है, उससे बहुत ज्यादा जो है स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड. They're so much worried about their grades as well as their admissions, and there are so many things जिसको वो एक वक्त में डील कर रहे होते हैं. तो उसमें भी कोई ऐसा आइडिया है, कोई सजेशन है कि उसको कहाँ ठीक किया जाए, किस पॉइंट पर एज अ स्टूडेंट आप उसको कैसे देखते हो? जी यस. इस हवाले से जो मुझे जब फील हुआ, मुझे भी पाकिस्तान में नहीं था फील हुआ. जब मैं आयरलैंड में था अपनी स्टडीज उधर कर रहा था, फर्स्ट ईयर में भी
गुजर गया. सेकेंड ईयर में जब थोड़ा सा टफ हुआ, मुझे समझ आई कि how much people are concerned about their mental health. वहाँ पे universities में they have counselors. If they have any sort of issues, they just go to them and then they talk. If not, they email the lecturers. Like अगर कोई deadlines हैं जो उनसे अभी नहीं meet हो रही, उनके पास और भी चीजें. Obviously, even if you're a student, you're not just studying. You have other responsibilities as well in your house. Like हर बच्चे की फर्क तरह की situation होती है. सिचुएशन वो होती है. कुछ नहीं कर सकते अपनी studies पे. तो one thing which results in all that mental stress is the education system's pushing too much and expecting perfection all the time. Like nobody's perfect, and so I think teachers and the education system itself should take it a bit easy on the students and tell them that it's okay to fail sometimes. It's okay to get lower grades sometimes, but if you do it once, you will learn from that. And if you do it ये again, बड़ा अच्छा पॉइंट है. अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, मैं आई एम सॉरी आपकी बात के बीच में मैं बोल रही हूँ. बड़ा अच्छा पॉइंट इसे आपने कवर किया ये वाला, कि ये जो एक परफेक्ट रहने का जो एक सिस्टम हमने बना दिया, जैसे किसी ब्रांच का रिजल्ट जो है, अगर वो ए स्टार्स प्रोड्यूस करने वाली ब्रांच है और उसमें कोई खुदा ना खास्ता गलती से ही कोई बेचारा स्टूडेंट ऐसा चला गया है जो अपना ग्रेड उस पॉइंट पे नहीं लाके खड़ा कर सकता अपने आप को, तो वो इम्प्रूव कर ही नहीं पाता. वो उसी जगह पे अटका रहता है और वो उससे आगे निकलता ही नहीं है. और ये मैंने एक ब्रांच का, मैं ये बता रही हूँ, आप एक ब्रांच के ऊपर बात कर रही हूँ, मैंने सिस्टम्स देखे हैं जो ऑन विच दे आर वेरी प्राउड ऑफ के भाई हमारे तो सारे बच्चों के स्टार्स आते हैं, लेकिन जो उनका मेंटल हेल्थ का इशू है, उनका जो एक वेलबींग है, वो इस पूरे तरीके से हिला हुआ है कि मुझे लगता है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग किसी चीज को जब विजिबली जब तक नहीं देख लेते, जब तक आपका कोई पार्ट डैमेज हुआ नजर नहीं आता, जब तक आप लोग उसको बीमार नहीं मानते. सो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है, इसके लिए तो पूरी बाकायदा एक समझ डेवलप करने की जरूरत है. मुझे लगता है जो लोग टीच कर रहे होते हैं उनका वेलबींग भी इतना इम्पोर्टेंट है. अगर वो अपने साथ एक एंगर के साथ क्लास में एंटर हो रहे हैं तो वो क्या देंगे बच्चों को? वो एंगर ही ट्रांसफर करेंगे और आगे आपका जो एक एनवायरनमेंट है वो किस किस्म का होगा. स्टूडेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको हम थिंकिंग स्किल बिल्ड कर रहे हैं उनके अंदर, दे शुड आस्क क्वेश्चन, बट क्वेश्चनिंग वाला पार्ट ही मैंने एलिमिनेटेड देखा है इन स्कूल्स. तो क्लेम करते हैं कि दे आर वेरी गुड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट एंड दे आर वेरी प्रोडक्टिव. वहां पर कोई बच्चा एक दूसरे के प्रेशर पे सवाल नहीं पूछता, ना सवाल पूछता है. और एक ये कि मुझे बड़ी प्यारी लाइन लगी, आपने कहा नो वन इज परफेक्ट एंड लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. तो ये जो लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स है, ये स्कूल का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको तो माइनस कर दिया, सबने निकाल ही दिया, है ना. तो मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल हिलेगी. और फिर जो बच्चे आएंगे बाहर, उनके पास थिंकिंग स्किल नहीं होगा, मगर बाकी ग्रेड वगैरह तो होंगे. और फिर जो बाकी का सीखना है वो फिर कहीं बाहर जाके सीखेंगे, या किसी के अंदर अगर ऑलरेडी चीज कुछ अच्छी मौजूद है, उसके फैमिली से, पेरेंट्स से उससे मिली है, तो वो उनके पास होगी. अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि स्कूल्स ये बिल्ड कर रहा है, तो आई एम सॉरी, देयर इज नो चेक, है ना. ये तो अब आप देखो, आप तो यंग हो, आपका ये एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें कुछ सजेस्ट करते हो कि क्या करना चाहिए? देखिए मैम, फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जी आप बोलें, आप बोल रहे थे. जैसे आपने बताया कि जो एक तरह से स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है कोई मेंटल हेल्थ का, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में एटलीस्ट मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मतलब, और ये बड़ी नेचुरल सी बात है. इस तरह हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा हर टाइम खुश रहे या हर टाइम स्ट्रेस फ्री रहे या उसको कोई चैलेंजेस ना आ रहे हों. फॉर एग्जाम्पल
किसी को नहीं, चैलेंज आना डिप्रेशन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। चैलेंज तो जी आना चाहिए, जी लेकिन उसको डिप्रेशन जी में जी कन्वर्ट जी कर देना या डर में कन्वर्ट, जैसे आपने कहा कि ये बहुत एक बात होती है, मैंने अभी ये नोट किया आपका ये वाला पॉइंट के, जो लोग कहते हैं ना तुमसे नहीं होगा और तुम ये कर लेते और तुमने ये नहीं किया, तुमने इतना टाइम जाया कर दिया, ये जो कॉन्सेप्ट है जी अगर हम इसको बनाएंगे तो वो चैलेंज तो नहीं रहेगा, वो तो कुछ और हो जाएगा, वो आपको हिंडर हाँ जी करेगा आपकी प्रोग्रेस जी में, आप आगे नहीं निकल सकते जी उससे। तो जी ऐसे ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर्स पे और सिस्टम पे जाती है, लेकिन जी एज अ स्टूडेंट आपने क्या किया अपना मेंटल जो एक स्ट्रेस या अपना जो चैलेंज है उसको डील करने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, आपके पास क्या एक चीज थी जिसने आपको उसमें से बाहर निकाला? मेरे पास सिर्फ म्यूजिक है और वेरी स्पोर्ट्स गुड, वंडरफुल, यस यस, ये दिस इज द पॉइंट, बेस्ट पॉइंट है। मेरे ख्याल है और लोग भी बात करना चाहते हैं आपसे, मैं बोल रही हूँ, मैं बस इसके बाद बात बंद करूंगी अपनी, बाकी लोग दे आर मोस्ट वेलकम, दे आस्क क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि जो हॉबीज हैं और जो बच्चे करना चाहते हैं अपने एकेडमिक्स के अलावा, उस पे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो एक जोन है बच्चों का, वो एक प्लेस है जहाँ पर बच्चा जो है कम से कम अपने आप को, अपने अंदर जो चल रहा होता है उसको फाइंड आउट करता है। जी जी एग्जैक्टली जी हाँ, हाँ जी, तो अब कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आ जाए। सभी साहब कहाँ चले गए? सभी साहब हैं जी जी जी, सभी साहब जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी वालेकुम वेल एलेबोरेटेड मिस्टर एज़ेल एंड मैम आसिया, काफ़ी रोशनी डाली आपने टॉपिक के ऊपर, और इसमें डेफिनेटली द टॉपिक इज अबाउट अ स्टूडेंट्स माइंडसेट which is dealing with failure and success, definitely in a learning environment, and it reflects the image that they have in themselves when it comes to their learning potential. अब इसमें जो चीज बेसिकली इवेंचुअली इन्फ्लुएंस करती है वो मोटिवेशन और लर्निंग हैबिट्स स्टूडेंट्स की करती है। इसमें क्योंकि आपका टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड, उसमें एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट कि आपके टॉपिक में एक कैटेगोरिकली इट हैज बीन स्पेसिफिकली बीन मेंशन्ड अबाउट आइडियल स्टूडेंट्स। सो आइडियल स्टूडेंट्स को अगर हम लेते हैं तो आइडियल स्टूडेंट्स ट्रेट्स जो है, दे मेक देम यूनिक अमंग अदर्स and they will never waste time on non-productive things, and they are going to be goal-oriented person. That means it is always taken for granted कि जब हम बात करें किसी ideal student की तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है और उसको लेकर हमने आगे चलना है। अब इस हवाले से जो चीज आ जाती है, अब स्टूडेंट्स आप देखिए मास्टर्स कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो चीज हमारे पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से मैं स्पेसिफिकली फिर इसमें यहाँ पे बात करूंगा कि प्रॉब्लम आती है आगे चलकर करियर मेकिंग में ऐसे आइडियल स्टूडेंट्स की कि वो कौन सा प्रोफेशन, विच प्रोफेशन दे शुड गो इन फॉर एंड विच प्रोफेशन दे शुड अडॉप्ट। अब उस हवाले से जो मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट, और एजुकेशन मेरा करियर रहा है, इंडस्ट्रियल करियर सेक्टर्स में भी रहा है और एजुकेशन में भी। प्रॉब्लम आइडियल स्टूडेंट्स को जब आती है और सीनियर मोस्ट क्लासेस के हवाले से, नॉट ओ ए लेवल्स, मैं सीनियर क्लासेस, सीनियर लोगों की बातें कर रहा हूं, उसमें वेन एवर दे आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, एक आइडियल स्टूडेंट ऑलवेज टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि जी मैंने जहां भी CV अपना ड्रॉप किया मुझे वहां पर जॉब मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी क्वालिफिकेशन और ये वो सब चीजों की वजह से। Whereas the real situation is exactly the other way around. Why is it so? मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर उठाते हैं, जॉब आ गई किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, एक आइडियल स्टूडेंट अपने तौर पे अज्यूम करता है कि एक CV बनाया हुआ होता है और वही CV जो है वो हर जॉब के ऊपर वो अप्लाई कर रहा होता है, which is totally wrong. For instance, in an industry, if there is a sales and marketing position और एक बंदे ने अपने जो रिसर्च वर्क है या अपनी कोई ट्रेनिंग की है या कोई और पब्लिकेशन की है, वो उसने किसी और डायरेक्शन में की हुई है, उसने एजुकेशन लाइन में किसी, तो वो उसका जो CV है वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो वो तो स्ट्रेट अवे रिफ्यूजल हो जाएगी। मे बी
अंडर आइडियल कंडीशंस वो सोच रहा है कि जी मेरे पास A+ रेटिंग है, मेरी CGPA 3.7 3.8 और इतना ज्यादा अच्छा आया हुआ है। और तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में एक आइडियल स्टूडेंट के हवाले से और बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपने भी उसमें मेंशन किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं। इन माय लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने बताया था कि पॉलिसीज में मैम आसिया से भी चीज को बड़ा एम्फोसाइज किया था कि जी पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो सही नहीं होती और बेचारे अच्छे अच्छे लोग जो हैं दे बिकम फेल्योर्स। तो वो चीज अपनी जगह है और उसके हवाले से एक जो है माइंडसेट वो इतना क्लियरली बंदे को अपने तौर पे बनाना पड़ता है इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। तो ये एक चीज है और ये एक इट्स अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर स्टूडेंट्स। तो उस हवाले से ये जो है मुश्किल पेश आती है। तो ये तो था एज फार एज टॉपिक इज कंसर्न। बाकी ये है कि मिस्टर एजल, इट इज रियली ऑफ इमेंस प्लेयर दैट यू हैड बीन अ स्क्वॉश प्लेयर आल्सो, दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी told us in your presentation also. और ये है कि fortunately I had also been a district level squash player और इवेंचुअली लेटर स्टेजेस में मैं टेनिस वगैरह में आ गया, लॉन टेनिस में। और फिर खैर अब तो स्टेज के हिस्से में है कि जहाँ पे गेम वगैरह हो ही नहीं रही है, सिर्फ वॉकिंग हो रही है। दो आई अपीयर टू बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक और वॉकिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो ये जो थी चीज थोड़ी सी अपने बारे में भी, और जो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा आपने और मैम आसिया ने इस चीज को एलैबोरेट किया। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दिस थिंग इनटू इट। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सभी साहब आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। ग्रेटफुल के आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। नहीं, इट्स रियली अ प्लेजर, इट्स रियली अ प्लेजर हियरिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है नम्रा यहाँ पर है, नम्रा उस्मान। नम्रा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नम्रा और भी मैं नाम पढ़ती जाऊं तो लोग हैं यहाँ पर। यू कैन टॉक प्लीज, यू कैन शेयर। बिनिश है, उम्मे फरवा है, मेरा ख्याल है उम्मे फरवा। ऑलराइट, हाँ जी। तो बिनिश के क्वेश्चन, इजल आपने देखा चैट में क्वेश्चन है बिनिश का? जी 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 जी। म्यूजिक, वेल पर्सनली इसको मैंने एज अ हॉबी रखा था। There was this time where I was thinking to pursue it in like my education as well, but then I just ended up not doing it. But the point where something becomes a distraction is the point where you kind of lose the balance. So you need to know how you can balance something. For example, music. I just use it as an escape from my my routine. It just working all the time just stresses me out. Concentration level itna, so मेरा अभी concentration span भी इतना develop नहीं हुआ. Like maximum I could go for like 30 minutes, and उसके बाद I need a bit of break to do something, and that's when I do music, which is kind of it relieves me of my stress and everything else. So but yes, motivational podcasts is again another thing. So that's where personal preferences come in. ठीक है, मेरा ख्याल है बिनिश को पता चल गया, समझ में आ गई ये बात। मेरा ख्याल है कि म्यूजिक जो है जब आप उसको करते हैं तो वो आपको इंगेज करता है आपके इनर सेल्फ के साथ। इसी तरह पेंटिंग भी और राइटिंग भी, ये सब आपको आपके जो अंदर चल रहा होता है उससे कनेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है उसको रिजॉल्व होने के लिए यू नीड समथिंग, और म्यूजिक ये करता है। और जब आप ऐसे कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मेरा ख्याल है आप ये जो एजल है, आपको गिटार आता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छे से बजाना आता है? Mainly I play the guitar, yes. Piano? Yeah. Oh, wow. Piano basics, Nice. but mainly the guitar, yeah. अच्छा जी। और आयशा हबीब लिख रही हैं, when something is your motivation, it doesn't distract you, instead it makes you
energize. जी जी आयशा. Yeah, exactly. Aziel, आप कुछ That's कहेंगे? how I feel as ये well. और महरीन ने भी यही बात लिखी, आई थिंक म्यूजिक रिलैक्स योर माइंड. ओके, निशात आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं एजियल से, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को. सभी साहब आए. जी सभी साहब. जी सॉरी, वो बहुत अच्छा एक बात का जिक्र हो रहा था, दैट इज अबाउट म्यूजिक, और मुझे ख्याल आया कि जो मॉडर्न रिसर्च आजकल है वो म्यूजिक का कह रही है कि जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट जो है वो म्यूजिक से हो रहा है. नाउ माय यंगेस्ट ब्रदर डॉक्टर नवीद इज इन अमेरिका, और पहले हिलरी क्लिंटन के साथ था, और वो ओवर 60-70 ईयर्स, तकरीबन 60-65 ईयर्स से वहां पर है. अब आप हैरान होंगी कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट के लिए म्यूजिकल टोन्स हैं, वो जिस बंदे को जो गाने पसंद होते हैं उनके फैमिली मेंबर से वो पूरी की पूरी उसकी जो उसका यूएसबी या फ्लैश ड्राइव के अंदर वो उन्होंने सेव करके रखे होते हैं, और वो कहते हैं उसके इतने खातिर खा अच्छे नताइज साथ साथ में कर रहे हैं. ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जो ब्रेन की मेमोरी के हवाले से अवेकनिंग है या कोई और इसके अंदर जो मेडिकल साइंस जो भी कोई इसको बेहतर समझती है, वो कहते हैं कि उससे इसके जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होती है म्यूजिक की वजह से. और मेरे अपने साथ ये होता है, व्हेनेवर आई गो फॉर अ वॉक, मैं अपने हेडफोन पहनता हूँ. आप यकीन करें कि मैंने एक टाइम रखा होता है, आफ्टर 1 आवर मेरी 1.5 घंटे की वॉक होती है. 1 घंटे के बाद मैं जब हेडफोन लगाता हूँ अपना, और मेरी वॉकिंग की स्पीड इतनी तेज हो जाती है म्यूजिक सुनते ही. यानी मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए ये. तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो म्यूजिक है ये इट्स अ लेयर आल्सो, एंड एट द सेम टाइम ये काफी मोटिवेट करती है. सही. तो हम, मेरा ख्याल है कि इस मौके से फायदा उठाएं और हम 1-2 लाइनें एजिल से सुन ही लें. तो आई रिक्वेस्ट यू. I'm not gonna lie, मेरा अभी ये बड़े आर्टिस्ट की तरह आप, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. हमें सुना दे, फिर हम सेशन खत्म करेंगे आपके म्यूजिक के नोट के साथ. यस. म्यूजिक का नोट तो I don't have anything at the moment. If you could maybe wait a couple minutes, I could get the harmonium. Yes, please. Any other point to add? महरीन ने कहा कि जी ठीक है, आई ऑल्सो लव टू लिसन म्यूजिक व्हाइल डूइंग मैथमेटिक्स. वाओ. कुछ लोग पढ़ाई को म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ जो एक बात है वो हॉबी की है कि आप अपने आप को कैसे किसी चीज के साथ एंगेज करते हैं. जब हम अपने आप को एंगेज करते हैं. जी 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 आ गए. जी प्लीज. Yeah, on this I would also like to add, जैसे सर सभी ने अभी mention किया था scientific research, इसके हवाले actually a proven research on music while you're studying that skill specifically enhances your productivity while you're working. That's what I do now. पहले मेरा बड़ा मुश्किल होता था कुछ सुनते हुए कुछ करना. Like I tried doing it slowly, so I've developed that ability to work while listening to classical music. It's not just like Western classical. कभी-कभी राहत फ़तेह अली खान को सुन लिया, किसी और लिया, इस तरह के जो आपको सूट करते हैं उस काम के साथ करते हैं. उसके अलावा definitely enhances. चलो अब सुना दो. We are waiting. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप जब बोल सकती हैं तो आपको आना चाहिए. जी जी जी. नेट बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा था, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इसलिए जब भी बात करना शुरू कर रही थी तो डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैं नहीं आई. तो आदिल जैसे बता रहे हैं कि वो भी जो है ना एक गेम करते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं. तो गेम कोई भी आप खेल रहे हो तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत एनहांस करती है कि आप अपनी स्टडीज को प्रॉपर वे से ले जा सकते हैं. जितना भी आप स्ट्रेच करेंगे, जितने हिसाब से आपकी प्लानिंग है पढ़ने की, आप पढ़ सकेंगे. लेकिन दरमियान में अगर आप 1-2 घंटे की ब्रेक देके
कभी गेम और कभी दरमियान में कुछ और काम कर लें, तो इस तरह से आप बिल्कुल फिट रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और मैं तो इसकी जो है गवाह हूँ कि ये जो मिस निशात हैं बहुत अच्छी वंडरफुल टीचर हैं, उसके साथ ये गेम भी करती हैं, उसके साथ ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इन्होंने अपने बेटियों को गेम्स में एक्सेल करवाया है। वो खेल रही हैं बैडमिंटन और डॉक्टर भी बनाया है और अभी वो स्टडी कर रही हैं। सो ये बड़ी एक ऐसी पेरेंट है जिनसे बहुत एक अच्छा पेरेंट वाला टिप लिया जा सकता है कि, और ये दिया भी है इन्होंने। सो थैंक यू निशात, आप जी आसिया, बहुत शुक्रिया। सो ये बहुत अच्छे से बता सकती हैं, गाइड कर सकती हैं हमें कि किस तरह आप अपने टाइम को, जैसे इन्होंने बताया, टाइम को और मेंटल अपना जो भी आपका काम है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं कि वो आपको मुश्किल भी ना लगे और आपका सारी चीजें जो साथ साथ चले। आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर Aziel. जी Yes. I'm here. I was listening to the जी थोड़ा सा ही है चंद कितना आपने सुना होगा probably not. Oh wow. Yeah, Yes, it's yes. So we are waiting, please. थोड़ा सा ही. I'll just, No, I'll Yes, just do Aziel, it I'll like wait. Yes. All right. Oh, that's good then. चन्न कितना गुजारी आई रात वे बेटा ईद लीला ते बात वे चन्न कितना गुजारी आई कोठड़े उत्ते कोठड़ा वे माही कोठे सुख दिया तूड़िया कलिया राता जाग के असा गिनिया तेरिया दूरिया वे चन्न कितना गुजारिया वो चन्न कितना गुजारिया वो चन्न कितना गुजारिया. Yeah, that's about it. Wonderful, wonderful. Thank you Beautiful, so much. beautiful. It was really marvelous, marvelous. Beautiful, yes. Marvelous, yes. Thank you. जी, मेरा अब हमारा सेशन खत्म होने का टाइम आ गया है और बहुत बहुत शुक्रिया. I just missed this. I just came in this session. तो कोई बात नहीं, अब ये रिकॉर्डिंग में सबको जाएगा. इतना अच्छा Yes. I will edit this tomorrow and will share with everyone as well. I'm sorry my internet wasn't working. It just came back. ओके, तो आई थिंक हमें इसको खत्म करना चाहिए. कोई एक बात एज़िल आप हमें बता दें जाते जाते, एक अच्छी सी बात, और फिर हम इसको खत्म करते हैं सेशन को. अच्छी बात है तो खैर सारी take life easy. जी take life सबसे इम्पोर्टेंट बात है. थैंक यू वेरी मच. सो एज़िल की जो एडवाइस है वो सारे लोगों के लिए कि हैव फन और सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में सिंसियर होने की जरूरत है. ठीक है जी, चले खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलेंगे. ओके, थैंक्स अ लॉट. Okay, thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, Aziel. Thank you, everyone.